Writers have united against what they call an assault on India's tolerance, pluralism and diversity. This on a day when President Pranab Mukherjee also reminded India that these are our core values. We have seen three of our most respected and best-known voices from literature return their national awards, their Sahitya Akademi Awards. Nayantara Sahgal, who's joining us from Dehradun, was one of them. Ashok, Vajpeyi, well-known poet, was another of them. And with me in the studio, Uday, Prakash, well-known author and poet, was in fact among the first to return the awards after the assassination of rationalist Mr. Kalburgi. All three writers who've returned their national awards are making a powerful statement in solidarity with what Nayantara Sahgal called the right to dissent of all Indians. And all three are here on the buck stops here. I'd like to start with you, Ms. Sahgal, if I may. A number of questions have been raised, obviously, by people on the other side of the ideological divide from you, who are saying, why have you done this now? There may have been many provocations in the past. There have been many cataclysmic events in India in the past as well. What prompted you? What was the turning point? What for you, ma'am, was the last straw that made you do this? Well, Barkha, there has been a rising tide of hatred and violence in the last few months, or shall I say the past year or so, since the present government came to power. And I don't think there has ever been such a danger to secularism as there is today. And recently, the murder of these writers and scholars, and then the lynching of this poor man in Dadri have brought the nation's attention to these ghastly events, and therefore it was time to speak out. And ma'am, while there is a lot of admiration for the stand that all three of you have taken, there are also questions that are being raised about the fact that whether it was Dadri or the assassination of the rationalists, these events took place in states which were run by other parties. For example, Uttar Pradesh is actually governed by the Samajwadi Party and not the BJP. That is what BJP supporters are saying. So what would you say to that counter narrative that is making that argument? I would say that it should be pretty obvious that there has been no danger as such to secularism, because no government until today, not even the previous BJP governments, has ever declared its intention to convert India into a Hindu Rashtra. And thereby they are promoting the Hindutva ideology, which doesn't tolerate any debate or dissent. And this has never happened in India before. I repeat, not even under the previous government, under Atal Bihari Vajpeyi. Let me bring in Ashok, Vajpeyi and Uday Prakash, the other two writers who have returned the Sahitya Akademi Awards. Ashok, Vajpeyi, you sent a check of 1 lakh rupees with a scathing statement which basically said to be a minority is a crime in India today. Aapne aisa kyun kaha? What made you say something like that? What made you say to be a minority is a crime? You see, because after all, this boy who was lynched to death was on the basis of a rumor which was spread by the majority people. Now, whether you are a minority in religion or a minority in language or a minority in ideas, you are being targeted. I mean, this is a very alarming situation where to be in minority is being adjudged to be already in doubt. Our Minister of Culture says that the road which has been named after Abdul Kalam is justified because Abdul Kalam, in spite of being a Muslim, was a nationalist. Now, these kinds of utterances point out towards what? That you are saying again and again that being a minority is not acceptable.
And Ashok ji, you have also expressed big disappointment with the Sahitya Academy itself. Now, the three of you sitting here have taken very individual, private decisions to return your awards, but the Academy has done absolutely nothing to stand up for artists and writers. Well, the Academy has done nothing. Yes. So, the National Academy of Letters is supposed to be a national body which should be defending the rights of writers. We should be looking into issues which impinge on the freedom of writers. Now, our academy, instead of doing it, has been organizing seminars on Swachhata Abhiyan, etc., and had kept quiet about these attacks. Has it tried to persuade the government or to pressurize the government that they should take action? True that some of the states where all these killings have taken place are not exactly governed by the BJP. But had the government of India brought some pressure on these governments to expedite investigation? Yes. I mean, one of them has been dead for more than a year and no killer has been apprehended so far. उदय जी, आपने कालबुर्गी जी की असैसिनेशन के बाद अपना अवार्ड वापस किया. Now Ashok Vajpeyi, Nayantara Sahgal have done the same. I remember when I met you last time, आपने कहा आज डर लगता है. It's reached a point कि आपके जैसे जो लेखक है डर लगता है. क्या सच में डर लगता है? Do you feel vulnerable? Definitely. I was telling you that it's day by day release. I mean, because like you said that this was your individual decision. So I personally feel that every writer is always, lonesome. He's isolated. Every writer is alone. Definitely, it's a solo act. The writing, in fact, is a kind of a solo act. Yeah. One has to like performing. Like Ghulam Ali has been stopped, but a singer is always a soloist. Yeah. He doesn't hold any that way organization or union. So every writer, in a way, is a kind of an individual, and if that individual freedom is seized. And how scared do you feel? क्योंकि जब हमने प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, आपने मुझे कहा मैं तो देश छोड़ने का सोच रहा हूँ. The reason is like what? Is that serious? आप सच्ची में देश छोड़ने का सोच रहे हैं? I tell you one example. I came on 2nd from US, and my mobile was not working because it was without any charge. So my wife kept on calling me, and my mobile was not working. She got worried. So everyone is worried these moments, and like what happened in Dadri, just a rumor. So I personally feel, Barkhaji, since the coming of this internet and all, mobiles and internet and television and you have become even mobile. People are losing the kind of a community life and interacting with each other, and this kind of an isolation, it is a basis to generate any kind of rumor or lie against anyone. It's frightening. Definitely, suppose if somebody comes and spreads a rumor that I also eat a beef and I'm a beef eater, anything can happen to me. So any dissenter, like Nayantara ji had said about emergency, so that the censorship was there, and that was also taking away of our freedom of expression. But that was a legal and constitutional decision when every right was suspended by the law. But here it's not any legal act. The people are working on the grassroots level, and they are let loose now. I'm glad you've brought up Nayantara Sahgal's opposition to the emergency, because I want to take this to you, Ms. Sahgal. People forget that you were amongst the most scathing critics of the emergency, even though it was a decision taken by your cousin Indira Gandhi. Your book, Rich Like Us, was actually set against the backdrop, a fictionalized account set against the backdrop of the emergency. You were asked to basically undergo censorship for your works. So when you look back at those years, you have said that this is the darkest hour. But you also lived through emergency. So are you being proportionate, given that you saw the emergency? What we're seeing today, at least we're all here, we're able to speak our mind, we're all able to criticize the government when we think it does something wrong. That's very different from the emergency, isn't it? Barkha, it's not very different, because as we have already said, people are being murdered. Now that is a very unacceptable situation. And as far as the emergency is concerned, I would like to make a distinction between Indira Gandhi's emergency and the present situation. Indira Gandhi was a Democrat gone wrong, very wrong.
today's leadership is fascist. And there is a very, very big difference between the two. I fought the emergency with all my strength, and I am doing the same today in this situation. Ma'am, you have been, in the last 24 hours, people have said that you accepted your award 2 years after the 1984 riots. We know that you were among the founding members of the PUCL, which actually did some very good work on the anti-Sikh riots to bring justice to the victims. But the question still remains from your critics. Why did 1984 not form a cornerstone of injustice for you in the way that the Dadri lynch mob does? You've mentioned the PUCL, and as you have also mentioned, I was a member of that. I was a vice president of the PUCL in 1984. And as you have also mentioned, the PUCL was the first organization to do an investigation of the riots and bring out a full and detailed report naming names of the people who were responsible. And I think the entire country at that time, barring the perpetrators of the riots, was in agreement that that was an atrocious and monstrous massacre. And therefore, the country was united on that, and there was no threat to the secular fabric at that time. There were then, after that, other horrors, such as the Babri demolitions, such as the Gujarat massacres. But never before has a government in power declared its official intention to ban speech, even to make free speech amount to sedition. These things have not happened in any country which calls itself civilized and which is not at present under an emergency. All this is happening only today. And today, therefore, our secular fabric is in danger. And therefore, again, it was time to speak out very clearly against it. Let me though, ma'am, give you some examples from the past which you would know better than me. Salman Rushdie's book was banned by a Congress government. You have had sedition cases. Asim Trivedi, the cartoonist, he was put away in prison on charges of sedition under a Congress government. So I would say that when it comes to banning, neither of the two national parties have actually shown much tolerance or shown consistent sort of support for free speech. Would you agree? No, I would not agree. Lady Chatterley's lover was banned in Britain, though nobody can call Britain anything but a democracy. So these bans, the occasional bans which happen at times of particular need, I'm not supporting them. I don't support any ban. But they cannot be compared with what is happening today. When it is official policy, as my friend Ashok Vajpeyi said, to declare any minority a traitor, and for that minority therefore to feel highly insecure in the present circumstances. There is no comparison between anything that has happened in the past and today. Ashok Vajpeyi, let me bring you in. Do you accept that, Nayantara Sahgal says that the government has virtually declared a kind of policy against dissent and free speech? Actually, we haven't heard from the Prime Minister, and all three of you have flagged that point, that it is his silence that is disturbing. Ashok, if the Prime Minister were to say something which was absolutely in condemnation, would that make it different for you? You see, this government seemed to have developed a strange ambiguity in terms of policy statements. I mean, today the Finance Minister and the Home Minister have declared that the secular nature of Indian Republic will be defended and nobody will be allowed to violate it, right? But while you make these announcements, on ground what is happening, you keep silence on that. You are not condemning the Prime Minister, who speaks on everything under the sun and on the earth, who has views on everything. How is it that the Prime Minister is unaware that the
agitation and the kind of fury that the creative and the reflective community of this country is feeling at what is happening. So he must come out and assure us that this government would take care of these assaults, and that, to keep on putting the blame on the state governments because your government is not there. Have you pressurized them? Have you asked them to report why action has not been taken? How a murderer of Narendra Dabholkar, although a year has passed, has not yet been apprehended? Yeah. So it's not a question. I would like to add to what Ashok has just said. Yeah, Yeah, go ahead, ma'am. May I just add one word? Yeah, please go ahead. I think what all three of us would like to say, will the real Mr. Modi stand up? Yes, that's an interesting poser, in a sense, coming from all three of you. Will the real Mr. Modi stand up? Uday ji, you told a story once that your mother died of cancer, और उस समय आप बहुत गुस्से में थे और आपने कहा जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी आपने उनको फेंक दिया गुस्से में. That what kind of God is this? My mother could not be saved. और आपने कहा कि अगर ये word अगर spread हो जाए तो ये मुझे आके लोग पीट देंगे. Yet now these days I don't know who is creating this kind of a hypersensitive society which doesn't tolerate anything, which is a dissenting. And we had seen many fascist governments and even Stalinist, those socialist dominated states, where dissenting voices were sent to Siberia, put behind in a kind of a solitary confinement. But nobody was killed this way. Now they are being shot dead. And you raised the question why it's happening in other states where Congress is ruling, SP is ruling. And this is my question. Why it is only happening there? Why it's not happening in states where BJP is ruling? So it shows that they have a design, a kind of a well thought out. They would say the law and order is a responsibility. They want of the to simply destabilize those other governments, and this is the reason that they are more active. The forces, they really command to. Ashok, one of the things that BJP supporters would say to you, Uday and Nayantara ji, is that you are a left liberal cabal. You must have heard this before, that this is in fact an ideological battle and that this is a clash between the right of centre and the left of centre. Do you see any merit in that argument, Ashok ji? Well, to the extent that there is an assault on the liberal space, which we have been defending and out of which we were actually born as writers, if that liberal space is under attack, you cannot get away by just saying that we are left liberals and that liberals. We are defending values which are values of Indian tradition, of inclusion, of accommodation, of openness, of plurality. These are not brought from any left or whatever ideology. These are values of Indian tradition. So in fact what is happening is, in the name of Indian tradition, you are really destroying Indian tradition. Indian tradition has been a much more humane, much more open, much more interactive, much more dialogue-ridden tradition. You cannot create a tyranny of uniformity and call it Indian tradition, because such a tyranny has never existed in Indian tradition. Yeah. Nayantara Sahgal, if I may come to you now, there's a book by Rashid Kidwai which talks about the years that you were so angry with Indira Gandhi and so disillusioned with the Congress during the emergency that there's actually an anecdote where it quotes Subramaniam Swamy, and you can tell us if this is an authentic anecdote or not. Subramaniam Swamy saying that you told him that maybe even the Jan Sangh would be better than the Congress because you were so angry with the Congress at that time. Are you familiar with this anecdote? No, I've never heard it in my life. Well, it's in Rashid Kidwai's book and I also read it for the first time today, so I thought I must ask you. But, more seriously... Well, I don't think Rajdeep Desai, I think Rashid you should Kidwai, check facts Rashid Kidwai before quoting putting them Subramaniam into Swamy. books. Yes. Well, I have never heard that incident at all. Now, you said, will the real Mr. Modi... I would like to just add one thing. Yes, ma'am, go ahead. May I add something to what Ashok has just said? Yes.
about Indian tradition. I'm speaking now, Barkha, as a Hindu. I am a Hindu and I am a believer, and it saddens me and infuriates me more than anything else the mockery that Hindutva has made out of Hinduism. It has reduced it, shriveled it to a, I don't know what to call it, a kind of nightmare. This is not Hinduism. And do you believe that believing Hindus like yourself need to reclaim Hinduism from Hindutva, ma'am? I believe that millions of Indians like me who are Hindus reject Hindutva. I think they are horrified at what Hindutva is making of Hinduism. And I resent what it is doing to my religion, which is an ancient culture and one of the most civilized in the world. I resent what they're doing to it. Let me ask you a final question. You said all three of you, apart from making a statement in solidarity of the right to dissent, are asking the Prime Minister a question: will the real Mr. Modi please stand up? What do you mean by that? Do you believe that there is a confusion? Do you believe that his silence has created an ambiguity? Elaborate on what you meant. What I meant is that here is a Prime Minister famous for his oratory who hasn't said a word about the situation in India that we've been talking about today. On the other hand, abroad he spouts secularism and says all Indians are equal and the rest of it. Now, which Modi is real? Ashok Vajpeyi, if you want to add to that. Well, one can argue on behalf of the Prime Minister that he is too busy with larger issues. But if an issue of culture and an issue of the world of ideas and creativity do not engage his attention and he finds them minor and keeps silence about them, this is already a comment of his understanding and commitment to Indian culture. Now, I want to bring all three of you back up on the screen and just ask all three of you whether the returning of the award is a symbolic statement, or do you believe it could galvanize a change and make writers and artists more secure? Nayantara, I'll start with you. Is this symbolism? Is this something more? No, Barkha, as far as I'm concerned, I have done what I believed was the right thing to do. And I think my comrades on this channel must feel the same way. It's by no means a symbolic issue. I'm deeply hurt. I feel sorrowful that the Sahitya Akademi, which should be the guardian of the freedom of speech and the freedom of thought, has not said a word in this regard about the murder even of writers, let alone the general suppression of the freedom of thought. I think they should have done. I do think that even today, if they and Mr. Modi also would sit down and talk about this, I'm sure all three of us would be glad to sit down with them and discuss the matter. I would. You're saying if the Prime Minister wanted to talk to you about this, you'd be happy to meet him? I would be happy to meet anyone who is willing to debate and discuss. Barkha, I'm a child of Gandhi's India. Yes. And Gandhi believed in discussion, not in warfare against people. He gave Indians one mantra, and that mantra was Ishwar Allah Tere Naam, Sabko Sammati De Bhagwan. And that is what Mr. Modi and people in his government need to remember. Well, I think that's very evocatively and movingly said. All three of you are making a powerful statement. You have taken individual decisions, but collectively there is something very strong in seeing all three of you, listening to all of you. And I think everybody has to speak up for freedom, for the right to dissent, for basic rights, because what is democracy without that? Nayantara Sahgal, Uday ji, Ashok Vajpeyi, thank you so much for joining us on the Buck Stops here. But ironically, even as we talk about freedom, in Mumbai, a concert that was to be performed by Ustad Ghulam Ali from Pakistan has been cancelled.
Ironically, even more ironically, this was meant to be a concert in tribute to Jagjit Singh, an Indian. And yet, because of threats from the Shiv Sena, the decision has been taken to cancel this concert because the Shiv Sena believes that the India-Pakistan equation should not permit Pakistani artists to perform. Not even beloved artists like Ustad Ghulam Ali, one of somebody who's as loved in India as he is in Pakistan. Let's go straight across now to Ustad Ghulam Ali to see how he looks at these developments. He is in Delhi right now. आप इसके बारे में क्या बयान देना चाहेंगे? आप नर्वस हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सी है कि आपने तो बहुत जिंदगी देखी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वाकई हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार तो प्यार ही है, हम तो प्यार ही बांटते हैं सुरों के साथ भी, और हम जहाँ भी गए, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हमें लोग बुलाते हैं। 40-45 साल की ये जो पीरियड है, इसमें हमने गज़ल गायकी का जितना भी लोगों की खिदमत की है, और ये पूरा पीरियड कम से कम 45 इयर्स का बनता है। तो इसमें प्यार ही मिला है हमें, और हमने भी प्यार ही बांटा है जी। तो हमें कोई ये नहीं, मेरा ख्याल में कोई मेरी तरफ से तो प्यार ही प्यार है, और प्यार में इस तरह की बातें मेरा ख्याल में मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो लोग हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपके आर्ट, आपके म्यूजिक से प्यार करते हैं, और ऐसी कोई, मुझे लगता है ये सिर्फ एक राजनीति का खेल है। मैं तो प्यार का भूखा हूँ और प्यार ही बांटता हूँ, सुरों में भी, लफ्जों में भी। तो क्योंकि ये जो थोड़ी टेंशन हो जाती है ना, इससे फिर आदमी के सुर भी थोड़े बिखर जाते हैं। मैं वो नहीं चाहता कि किसी की भी सुर बिखरे जी। बहरहाल थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती से ये दिन मिलते हैं, और इनको बड़े प्यार से निभाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई तकलीफ एक दूसरे को हो, मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को प्यार मिले, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस्ताद साहब, जब हम पिछली बारी मिले थे, आप बनारस जाने वाले थे, आपकी संकट मोचन मंदिर में परफॉर्मेंस भी हुई। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने उस समय एक बात कही जो मुझे अभी तक याद है। आपने कहा म्यूजिक में कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, म्यूजिक में गॉड भी है, भगवान भी है, अल्लाह भी है। ये आपने मुझे कहा था। बिल्कुल सही बात है। मैं क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ में हम बुलाते हैं, मैं पूरी दुनिया में गया हुआ हूँ। अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, सारा, और 40-45 साल हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए। तो हमें खुशी होती है जब हमें को बुलाता है और उसकी हमें सेवा करने का मौका मिलता है। तो आपको क्या गुस्सा है कि थोड़ा दर्द हुआ है कि इस तरह की एक बहुत ही सिली कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है? गुस्सा तो नहीं है, थोड़ा दर्द हुआ है, दुख हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी जी। आप जिसको हम प्यार की तरफ ले जाते हैं, कोई बात नहीं, प्यार में दुख भी हो सकता है कभी। आप शिवसेना के नेताओं से मिलना चाहेंगे, उनको कुछ समझाना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीति ना करें वो? नहीं, कोई भी नहीं करता। ये पता नहीं क्यों ऐसा कुछ माहौल ऐसा बन गया है। ऐसा हमारे साथ तो, हम तो काफी सालों से बॉम्बे में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, ऐसी बात नहीं है जी। संकट मोचन मंदिर में जब आपकी परफॉर्मेंस रही, उसका क्या सिग्निफिकेंस था आपके लिए, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, उसमें भी आप तो सब जानते हैं कि वो बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया, और मुझे जाना चाहिए था जहाँ कोई बुलाता है, क्योंकि आवाज़ तो जो हमारी है, ये अगर हम ना भी जाएं तो आवाज़ तो पहुंच जाती है जी। इसमें तो कोई वो बॉर्डर नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो लोगों को दुख पहुंचे। जब आप बनारस गए तो आपको कैसे लगा मंदिर में जब आप गए और आपकी वहां परफॉर्मेंस रही? जी हाँ, मुझे बहुत प्यार से सुना गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कम से कम अपनी कला की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों के लिए लोगों की खिदमत कर रहा हूँ।
उस्ताद साहब, इंडिया पाकिस्तान में तनाव तो है, इश्यूज भी हैं, टेंशन रहती है, तो आपको लगता है कि उस टेंशन को देखते हुए आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं या इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, वो तनाव की वजह से कुछ मुश्किलात होती है? मुश्किल यही होती है कि दिमाग में खलबली मच जाती है। यही है जी। हाँ, ऐसी कोई बात और कोई मुश्किलात नहीं है। लोग तो बहुत प्यार देते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। तो आप सारे जो इंडियंस देख रहे हैं आपका इंटरव्यू अभी, उनको क्या कहना चाहेंगे उस्ताद साहब? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो सुर में रहें, प्रेम में रहें, सुनते रहें हमें, चाहे हम आमने सामने सुने, चाहे हमारी रिकॉर्डिंग सुने, सुनते तो रहेंगे हमने एक दूसरे को। कि ये जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा था, इसकी सबसे ज़्यादा वजह ये भी एक ज़रूरी थी कि जगजीत भाई का ये डेथ एनिवर्सरी का प्रोग्राम भी था, उसको उनको ट्रिब्यूट भी हो रहा था, मेरी तरफ से ट्रिब्यूट भी था। तो मैं वो इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा मुझे टेंशन पड़ी कि ये गड़बड़ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ये। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो हम ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि वो मेरे जी बोले क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे भाई थे, और उनका हमारा ऐसा आपस में प्यार था कि मुझे नहीं पता चलता था कि मैं पाकिस्तान में से हूँ, वो इंडिया में से हैं, कि हम जहाँ भी इकट्ठे होते थे लगता था हम एक ही हैं। एंड दिस इज द आयरनी दैट इट वाज अ ट्रिब्यूट फॉर जगजीत सिंह। आपने उनको करीब कहा, आपने कहा प्यार में कमी ना हो जाए। जो हमारे नेता हैं शिवसेना के, उनको आपकी बात सुननी चाहिए। और फ्रॉम ऑल ऑफ अस इंडियंस वी आर अशेम्ड दैट दिस इज हैपनिंग। उस्ताद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर जॉइनिंग अस ऑन द बस स्टॉप से। Against the backdrop of the Dadri lynching, it is now the President Pranab Mukherjee who is reminding India that our core civilizational values are of diversity, tolerance and pluralism. This is the Prime Minister's office has been briefed by the Home Ministry on the Dadri lynching, and peace committees are holding meetings appealing to politicians to keep away. Simultaneously, the Minority and Parliamentary Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi earlier today has held meetings with clerics, with local community leaders from the area in a bid to try and forge a note of peace after several discordant notes. In the meantime, Mohammad Akhlaq's family has been moved out of the village to an area allotted to them by the Indian Air Force. Remember, his son Sartaj is a corporal with the Air Force. However, demands continue for the Prime Minister to speak. Today, the Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Saeed, an ally of the BJP, was the latest to join the chorus of voices saying that the Prime Minister must reveal his Man Ki Baat on the Dadri lynching. To talk about this and more, we are joined now by Mukhtar Abbas Naqvi. Naqvi साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आज आपकी मुलाकात हुई क्लेरिक्स के साथ, जो दादरी और आसपास के इलाके हैं उनके लोकल लीडर्स के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या अपनी एंजाइटीज, क्या अपने कंसर्न्स रखे और आपने उनसे क्या कहा? देखिए, पहली बात ये कि बरखा जी, मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम आप जो आग में घी डालने का काम चल रहा था कुछ लोगों का, उसमें आप जो है वो आग में पानी डालने का काम कर रही हैं, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव नोट के साथ मैं बात कह रहा हूं। देखिए, जो लोग मिलने आए उनके दिलों में दर्द है, दहशत भी है, दर्द के साथ साथ दहशत भी है। ये बात, इसको हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहेंगे। और दहशत जो है वो जो पॉलिटिकल पाखंड है, वो पॉलिटिकल पाखंड की वजह से है, और जो कम्युनलिज्म का कंपटीशन चल रहा है उसकी वजह से है। और जिस तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, हमारे कान को भी बहुत अच्छा नहीं लगता जब हम सुनते हैं। नफरत होती है इस तरह के बयानों से, इस तरह के आवाजों से, वो कहीं से भी आ रही हो, किसी तरह से भी आ रही हो। ये बात सही है कि ऐसा मौका जब आता है तो कुछ लोगों के लिए ये उत्सव बन जाता है। कुछ लोग इसको जो है लोगों की लाशों के ढेर पर जो है वो आतिशबाजी बजाते हैं, उत्सव करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, और लोगों को आज जो है इस बात का एहसास, इस बात का यकीन दिलाने की जरूरत है कि ये मुल्क उनका है, ये मुल्क उनके लिए महफूज है, उनके लिए सुरक्षित है। कोई भी ताकत उनको इस मुल्क से असुरक्षित नहीं कर सकती। और नरेंद्र मोदी जी या हमारी सरकार का भी यही संकल्प है कि जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है
उस पर किसी तरह का डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट ना करने पाए। नकवी साहब, ये जो आपने कहा पॉलिटिकल पाखंड, और आपने कहा कि कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं, वो जो बयान है वो आपकी पार्टी के लोगों से भी आ रहे हैं। अगर आप साक्षी महाराज का सोचे, जो कहते हैं वी आर रेडी टू बोथ डाई एंड किल फॉर द काउ। आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो कहते हैं कि बकरी ईद से पोल्यूशन होती है गंगा में। आप आज वीएचपी की साध्वी प्राची की बात करें जो पहुंच गई वहां। आप संगीत सोम की बात करें जो वहां पहुंचकर सभा करते हैं और कहते हैं कि ये जो अखलाक के परिवार हैं ये काउ किलर्स हैं, ये गाय को मारने वाली परिवार है। तो क्यों नहीं बीजेपी, पहले आप अपने जो अपने नेता हैं, आपके नेता हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? एंड पर्टिकुलरली एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, आप क्या कहेंगे? वुड यू अपील टू योर पार्टी लीडरशिप की इनके खिलाफ कोई एक्शन होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सख्ती के साथ संदेश दे दिया गया है। दे दिया गया है। दूसरी चीज ये दे दिया गया है ऑलरेडी, बिल्कुल दे दिया गया है। जी हाँ, दे दिया गया है। और उसके साथ ही साथ हम इस वक्त लोगों पर बात नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन समाजवादी पार्टी के लीडर किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा जो है वो एक हैदराबाद के लीडर बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा जो और लोगों का नाम लिया वो बोल रहे हैं। ये जो है ऐसी आइसोलेटेड वॉइसेस हैं। इन आइसोलेटेड वॉइसेस को बिल्कुल आइसोलेट करने की जरूरत है, इनको पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क जो है वो कोई किसी की जो मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं वो किसी की खैरात पे नहीं रह रहे हैं, या अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं किसी की खैरात, ये उनका मुल्क है। वो भी उतनी, इस मुल्क के उतने ही जो है वो हकदार हैं, उसके अधिकारों के हकदार हैं। और ये बात बार बार कही जा रही है। ये बात सही है। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि सबका साथ सबका विकास, आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करी, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करी, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनको ये हजम ना हो रहा हो, और वो इस तरह की, अब कौन से हैं कहां से हैं मैं उसमें जाने की, जो आपकी पार्टी में है, जाना जो नहीं आपकी चाहता। की पार्टी में है, आपने कहा कि उनको सख्ती के साथ संदेशा ऑलरेडी दे दिया गया है। आपने कहा उनको मैसेज दे दिया गया है। ये मैसेज किस लेवल पे दिया गया है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दिया गया है, आपके लेवल पे दिया गया है, पार्टी अध्यक्ष के लेवल पे दिया गया है? किस लेवल पर साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ और संगीत सोम को कहा गया है कि अब आप चुप हो जाइए? जब मैं कह रहा हूं तो हम जब कह रहे हैं तो पार्टी के लेवल पे ही दिया जाता है, और पार्टी के लेवल पर ही दिया गया है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से दिया गया है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, हम ये कंपटीशन, जो कम्युनलिज्म का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन है, वो यूपी के लीडर बहुत बड़े चैंपियन है कि हैदराबाद के लीडर बहुत बड़े चैंपियन है, कि जिस तरह की जहरीली भाषा, जहरीली जहनियत है, वो जहरीली भाषा, जहरीली जहनियत को लोग पसंद नहीं करते। और बार बार ये संदेश और ये सबक इस देश की जनता ने बार बार दिया हुआ है। ये देश सेकुलर है, ये देश जो है वो पूरी तरह से समाज के एकता के ताने बाने को एकजुट करके रखने के संकल्प के साथ काम करने वाला है। इस देश के जो है वो एकता के ताने बाने को, सौहार्द को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, वो उनकी शैतानी मानसिकता है। और इस ऐसी शैतानी मानसिकता, ऐसी जो एविल डिजाइन है, उसके खात्मे के लिए लोग एकजुट होने पड़ेंगे। और आज यही बात सबने एक बात कही, सबने किसी बीजेपी के लीडर्स को नहीं, कुछ पार्टियों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर को भी अक्यूज किया, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी अक्यूज किया, और कहा कि ये जो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की वक्त था, उस वक्त जो है इस पर ये नमक और मिर्च छिड़कने का काम हो रहा है। इसका जो कंपटीशन चल रहा है, इससे जो है वो हम लोगों को निजात चाहिए। हम लोग चाहते हैं अमन और सुकून से रहे। सियासतदान आएंगे और उनका जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म होगा, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमें फिर मिलकर के आसपास में, पड़ोस में रहना है, हमारा फिर वही रिश्ता है। तो इसलिए मैंने तो उनको मैंने शेर कहा, मैंने कहा कि जो प्यार और नफरत के बीच की जो दीवारें हैं, वो प्यार और नफरत के बीच की दीवारें तभी टूटेंगी जब जो है हम इंसानी हकूक और इंसानी मान्यताओं और मानवीय मूल्यों के साथ खड़े होंगे। लेकिन नकवी साहब, ये जो कंपेटिटिव कम्युनलिज्म है, मैं आपकी बात मानती हूँ। कहीं आजम खान कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हम जाएंगे इंडियन मुसलमान की बात करने में, कहीं संगीत सोम कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है इस कंपेटिटिव कम्युनलिज्म में बीजेपी के भी नेता शामिल है। आप इतना तो मानेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी से ज्यादा आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आपकी माइनॉरिटीज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या मानेंगे कि आपके भी कुछ नेता इस कंपेटिटिव कम्युनलिज्म में शामिल हैं? उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, एमएलएज भी हैं, और
महेश देखिए, शर्मा हमारा मानना है- आपके कल्चर मिनिस्टर हैं, वो इस मर्डर को एक एक्सीडेंट कहते हैं। देखिए, हमारा ये कहना है, मैं इसमें व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा ये कहना है कोई भी हो, कोई भी इस कंपटीशन में अगर शामिल है तो वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गलत कहा जाएगा, गलत चीज है। हमने कहा कि बेगुनाहों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर सियासत नहीं होती, और इसीलिए हमने एक बात आज भी कही कि जो पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफरतें खत्म करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, दोस्तों इतनी तो ऊंची न ये दीवार करो। तो हमने कहा कि हमें दीवारें इतनी ऊंची नहीं कर देनी चाहिए कि हमारे दुख दर्द तुम्हें न सुनाई पड़े, तुम्हारा दुख दर्द हमें न सुनाई पड़े, और जब दीवारें ऊंची होती हैं तो इस तरह के जो शैतानी साजिशों के मानसिकता के लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। जी, मुझे आप ये बताएं नकवी साहब, आपने भी एक बयान दिया इससे पहले, दादरी के हादसे से पहले, आपने कहा जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए। आपको लगता है कि इतने बड़े नेता होने के नाते आपको इस तरह का बयान देना चाहिए था? क्या आप रिग्रेट करते हैं कि आपने उस तरह की भाषा यूज की? पहली बात यह कि बरखा जी, मैं हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, उनका एक कार्यक्रम था और उन्होंने जो ट्वीट करके इस पे कंफ्यूजन क्रिएट किया था, मैंने उसकी सफाई नहीं दी। मैं आपके प्रोग्राम में जरूर सफाई दे देता हूं। आज मैंने कभी ये नहीं कहा कि जिसे खाना है वो पाकिस्तान चला जाए, अमेरिका चला जाए। हमने ये कहा जिन स्टेट्स में बैन है वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तमाम और स्टेट्स हैं जहां पर अवेलेबल है, लेकिन इसको ये इशू नहीं है। इशू जो है वो सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इन इश्यूज को लेकर के हमें माइनॉरिटीज या मुस्लिम्स के सरोकार की चिंता करने की जरूरत है। उसको लेकर के हल्ला होता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कौआ कान ले गया तो ले गया। अब उसको जो है वो आप संभालते रहिए, झड़वाते रहिए, फुकवाते रहिए, इसलिए मैंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज या स्पेशली मुस्लिम्स, उनकी जो रियल प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम है, उनकी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनकी डेफिनेटली सिक्योरिटी भी उनके। तो बीफ के ऊपर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कौन क्या खाता है ये तो एक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट हुई तो मैं आपको इस प्रोग्राम में मौका देती हूं। क्या आप ये कहते हैं कि आप ये बयानबाजी से सहमति नहीं रखते कि जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान जाए? नहीं। डू यू टेक योर वर्ड्स बैक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमति नहीं रखता। मैं अपने बयान से सहमति रखता हूँ, ना कोई कहे तब सहमति रखता हूँ। तो अपने बयान से भी नहीं रखते? अपने बयान से भी जो ओवैसी साहब के झगड़े में आपने बोल दिया, अपने ही बयान से भी आप सहमति नहीं रखते? मतलब नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने उसको मैंने बैक भी नहीं कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने जब कहा ही नहीं वो बात, इसलिए उसको जो है वो बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है और उससे कोई अर्थ नहीं है उसका। क्योंकि जो है वो मैंने बहुत बार बार कहा था, मैं आपको उसकी क्लिप भेजूंगा, मैंने बहुत बार बार कहा था। वो जो हमारे मित्र हैं एंकर, उन्होंने पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाके चले जाएं, यहाँ चले जाए वो। मैंने कहा नहीं भैया, जहां पे अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हैं तो आप जहां अवेलेबल है वहां चले जाइए। इसलिए इतनी सी बात थी। उसके अलावा और मैंने कहा इशू ये भी कहा था, मैंने कहा कि सितारों के आगे जहां और भी है, और भी दिक्कतें हैं, और भी परेशानियां, उस पर डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए हमारा मानना है कि आज जो है लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। और मैंने इसीलिए आपके इस NDTV को, आपको मैंने धन्यवाद किया, बधाई दी कि कम से कम ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो ऐसे गर्म माहौल में, ऐसे जो है वो जहर भरे हुए, प्रदूषण भरे हुए माहौल में जो है वो लोगों के जो है वो के में सुकून पैदा कर सके, लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सकें और लोगों में विश्वास कायम कर सकें। और उसको हम कायम करेंगे। कोई भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना देश के सौहार्द को, देश की एकता को न तोड़ पाई है, न तोड़ पाएगी। ये बहुत सालों से ये चलता रहा है, लेकिन देश एक रहा है और हर बार इस घटना के बाद देश और मजबूत होकर उभरा है। नकवी साहब, आपने देखा होगा कि हमारे कई वरिष्ठ लेखक हैं, नयनतारा सहगल हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं, उससे पहले उदय प्रकाश हैं, उन्होंने अपने अवार्ड्स जो हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो उनको मिले, उनको वापस कर दिया। वो नाराज हैं कि प्रधानमंत्री खासकर कुछ नहीं बोले। आज आपके एलाय हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, मुफ्ती साहब भी बोले प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला बोले कि भाई नवजोत सिद्धू के बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद अखलाक के बारे में नहीं। तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? नकवी साहब क्यों चुप है?
देखिए पहली बात, राजनाथ सिंह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, बहुत मजबूती के साथ कहा कि किसी भी तरह का ऐसी ताकतों के साथ समझौता नहीं जो इंसानी वसूलों की हत्या कर रही हो। अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा भी की और इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ भी उन्होंने बोला, मैंने बोला, और उसके अलावा पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी ये बात कह रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर और बहुत ही वरिष्ठ और बहुत सम्मानित जो लोग हैं और जिन्होंने कि इस पे ऑब्जेक्शन किया, मुझे लगता है कि वो जायज़ नहीं है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की भावनाएं स्वाभाविक तौर से होती है। मैं उनकी भावनाओं को बुरा नहीं मानता, लेकिन वो भावना जो है उनको देखना चाहिए कि सरकार की भावना क्या है, सरकार जो है वो किस इंटेंशन के साथ काम कर रही है। और सरकार की इंटेंशन बहुत साफ है कि हम डिवाइड एंड रूल पर विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट एंड रूल पे करते हैं नकवी साहब, प्रधानमंत्री उस सरकार के हेड हैं। जैसे कि आज मुफ्ती साहब ने कहा कि सरकार की जो बात है वो प्रधानमंत्री की जुबान पर भी आए। ये मुफ्ती साहब ने कहा, आप ही के आला है। मुफ्ती साहब ने नहीं, मुफ्ती साहब ने जो है वो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला वो भी सुना होगा। मुफ्ती साहब ने या जो और लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर के, देश के अल्पसंख्यकों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बार बार जो बात कही है वो लोगों उन्होंने सुना होगा। और प्रधानमंत्री जी उस पर ही टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार और पूरी पार्टी देश के सौहार्द, देश की एकता और देश के भाईचारे को कोई नुकसान पहुंचा ना सके, इसके संकल्प के साथ हम जीरो टॉलरेंस के साथ बात कर रहे हैं और इससे कोई समझौता नहीं। ऐसे वोट जो वोट की लोगों के बेगुनाहों की वोटों के बेगुनाहों की लाशों के ढेर पे खड़े होकर के हासिल करना हो, उसको हम चिमटे से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। जी नकवी साहब, आज प्रणब मुखर्जी ने भी बात की है इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही की गवर्नमेंट में किरण रिजिजू हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो MOS है होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा भाई मैं तो बीफ खाता हूं। ऐसे प्रदेश हैं इंडिया में जहां पे काउ स्लॉटर अभी इलीगल नहीं है। क्या बीजेपी ये कोशिश करेगा कि ये भी जो स्टेट्स हैं इसमें भी बैन हो, कि क्या आप लिव एंड लेट लिव का अप्रोच लेंगे? दैट इज व्हाट पीपल वांट टू नो। आपको वो प्रदेश मालूम है, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, केरला है, असम और बंगाल में भी कुछ सर्टिफिकेट के साथ अलाउड है। हाँ, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते। इस बहस में तो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने एक तजवीज़ रखी है कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसको बैन कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें, तजवीज़ें हैं उनकी। तो जब पार्लियामेंट चलेगा तो वो तजवीज़ पार्लियामेंट में लेके आए। जहाँ तक सवाल है, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। आपका अपना कोई इसमें व्यू नहीं है? नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं। एक आखिरी सवाल, गुलाम अली साहब हैं पाकिस्तान के मशहूर गजल सिंगर, उनके खिलाफ शिवसेना कहती है कि भाई उनका कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं नकवी साहब, लेकिन आप शेर व शायरी को पसंद करते हैं इसलिए पूछ रही हूँ। गुलाम अली साहब ने इस साल संकट मोचन मंदिर है बनारस में, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। इंडिया की इमेज क्या इन सारी कंट्रोवर्सी से खराब नहीं होती कि इतने मशहूर गजल सिंगर हमारे पाकिस्तान से आए हैं, उसी के खिलाफ आपके आलाए ऐसे शोर मचा रहे हैं? मैं अभी किसी ने जिसने कहा है मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो गलत कहा है। गुलाम नबी साहब को जो है वो सरहदों की सीमाओं से दूर रखने की ज़रूरत है। वो अमन का पैगाम लेकर के, चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, उनकी जो सोच है, उनके जो दिल में है, वो अमन की आस है। और उस अमन का पैगाम वो हमेशा देते हैं, और वो अपनी कला के माध्यम से देते हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से देते हैं, गज़लों के माध्यम से देते हैं। और उस अमन के पैगाम के जो संदेश वाहक है, जो मैसेंजर है, उसके लिए जो है वो सीमाएं तय नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बंदिशें नहीं होनी चाहिए। खुशी हुई कि आपने इतना क्लियर पोजीशन लिया इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट को इस तरह से ट्रीट किया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी, प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।